Good morning, children. Wishing you a bright and cheerful day. You all are very special to me. And I want to tell you that I really miss you all. I hope you all are doing very well at home. So welcome you all in today's GK class. So today we will do our new chapter. Chapter 4. Dear children, it's about good taste. About food we eat. We should eat fresh, clean food. We should wash our hands before and after meals. Today I will tell you about variety of food. But these are the basics we all should know. These are the basics that we should exercise daily. We should wash our vegetables and fruits before eating. Right? These are the basics. We should take proper 3 meals a day. We should not skip our meals. And most important, drink plenty of clean water. Dear children, today's chapter is about food we eat. We should eat raw fruits and vegetables. Good for our health, right? And most important, we should chew our food properly, nicely. Say no to junk food. Yes. Keep our bones strong. These are very important things to know, children. So healthy eating habits are very important. Though today we discuss about variety of food around the world, but भोजन हमारे लिए एक बेसिक ज़रूरत है. भोजन हमें एनर्जी देता है. खाना जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो हमें देखना ज़रूरी है कि हम कब, किस समय और क्या खाते हैं. बच्चों, हमें अच्छा, स्वस्थ व साफ खाना खाना चाहिए. राइट? जंक फूड खाना चाहिए बट बहुत कम. Right. So I am going to start a new chapter today about food in good taste. Chapter number 4 in good taste. So shall we start the chapter, children? Let's start. I have just told you about basics. Basics like what to eat, what not to eat. We should drink water every day, etc. etc. So in this chapter we will discuss, we will see variety of foods. So let's do this exercise. Tick the correct answer option. Question number 1. What is the Spanish dish paella made up of? Paella is a Spanish dish. What is the Spanish dish paella made up of? It is a Spanish dish, children. And the answer is rice. Please tick the answer. The answer is rice. Spanish dish paella is made up of rice. Paella means frying pan. बच्चों, पायला का मतलब होता है, आपको लगेगा सुनकर कि ये पायला क्या होता है. पायला मीन्स फ्राइंग पैन. सो ये पर्टिकुलर राइस की डिश फ्राइंग पैन में बनती है इन स्पेन.
स्पेन की फेमस डिश है ये, राइट? और इसको हम बोलते हैं पाएला बिकॉज ये फ्राइंग पैन में बनती है और राइस से बनती है. सी दिस पाएला, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर second question. Let's see the question. Which animal's meat is called venison? कौन से जानवर के मीट को वेनिसन कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज डियर. सो आप टिक मार्क लगाएंगे बी पर. डियर को वेनिसन कहा जाता है. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ डियर को वेनिसन क्यों कहा जाता है. ठीक है, सी दिस. वेनिसन मीन्स एनी हंटेड एनिमल आफ्टर इट वॉज किल्ड. किसी भी जानवर को जब पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में जब किसी भी जानवर को मारा जाता था तो उसे वेनिसन कहा जाता था. अब डियर को ही क्यों वेनिसन कहते हैं? बिकॉज डियर वर किल्ड मोर देन एनी अदर एनिमल. सबसे ज़्यादा डियर को ही मारा जाता था तो डियर का नाम ही वेनिसन पड़ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. पुराने ज़माने में जब जानवरों की हंटिंग की जाती थी तो उन जानवरों को वेनिसन कहा जाता था. और क्योंकि डियर सबसे ज़्यादा उनका हंट होता था, शिकार होता था, इसीलिए वी कॉल डियर अ वेनिसन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच इंग्रेडिएंट डू बेकर्स यूज टू मेक द ब्रेड राइज? जब हम ब्रेड को बेक करते हैं अवन में तो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रेड राइज करे, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, उठ जाए? सो करेक्ट आंसर इज यीस्ट. YEAST, यीस्ट. सो प्लीज़ क्लिक A. प्लीज़ क्लिक A. द करेक्ट आंसर इज A, यीस्ट. हम यीस्ट डालते हैं ताकि ब्रेड, ये देखिए, यीस्ट इज़ यूज टू मेक द ब्रेड राइज. ब्रेड को फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए, थोड़ा डो को ऊपर उठाने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट? ग्रेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच बर्ड इज़ अ कॉमन डिश इन फ्रांस? एक बर्ड के नाम पर एक डिश होती है फ्रांस में which is very famous. So which bird is it? It is, let me just tell you, it is duck. डक की डिशेस फ्रांस में बहुत बनाई जाती हैं. So please correct duck. Answer C. C is the correct answer. Are you all doing it, children? Please tick mark C. You can do it now or you can do it later. Later also you can see my video, the PPT, and do the exercise. You can do it later also. But if you want to do it now, you can do it now also. So duck is the correct answer. Now number 5. Sponge, marble and bundled are type of which food item? क्या ये सैंडविचेस होते हैं या केक होते हैं या पिज्ज़ा होते हैं? ये क्या होते हैं? स्पॉन्ज, मार्बल, ये क्या होते हैं? दीज आर केक्स. यू मस्ट हैव हर्ड स्पॉन्ज केक, मार्बल केक, बंडड केक. दीज आर केक. सो प्लीज करेक्ट B. C. B. Answer is B. Cakes. Answer is B. Now the next question, the last question. Which bread is used in the Middle Eastern cuisine? मिडिल ईस्ट का जो खाना है, मिडिल ईस्ट बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दुबई, बहरीन, कुवैत, ये सब मिडिल ईस्ट हैं. तो यहाँ पर कौन सी ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है? विच ब्रेड इज़ यूज्ड
in the Middle Eastern cuisine? The answer is pita bread. Pita bread is the correct answer. Bread used in Middle Eastern cuisine is pita bread. So please correct. Please mark your exercise nicely. Pita bread is the correct answer. Eat me every day. An apple is very important to have. Yeah, there is a phrase also behind it. An apple keeps you healthy and wealthy and keeps the doctor away. डॉक्टर को दूर भिगाता है एप्पल. तो हमें ये रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए. Every day we must eat one apple. Yes. Now the exercise number B. Exercise B करते हैं. Exercise A सबको समझ में आई होगी. I'm sure I've explained well. If there is any problem, you can text me or see the video again, children. Yeah. Let's do exercise B. It's about vitamins. It's about vitamins which are important, very important to have. बहुत ज़रूरी है इन्हें खाना. ठीक है. So number 1, oranges. Oranges में कौन से विटामिन होते हैं? Oranges has vitamin C. Vitamin C. Second is carrot. Carrot has vitamin A. A. So you can mark the way I have marked. ठीक है? Because it is match the following, right? So you can do the way I have marked. Orange, vitamin C. Carrot, vitamin A. Dry fruits. Dry fruit has vitamin E. E. So please match E and dry fruit. Please add and match. Yes. The next. Fish or chicken. Vitamin B. Vitamin B. So please match vitamin B and chicken. The last is spinach. Green leafy vegetable spinach. Spinach has vitamin K. So all these vitamins are very important for our health. Children, vitamin C, that is orange, improves our immunity system. It gives strength. ताकत देता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को. सो वी मस्ट हैव फूड विच हैज़ विटामिन सी लाइक ऑरेंजेस, लेमन, all citrus fruit, right? Carrot is very good for our eyes. Very good for eyes. Third is dry fruit, gives us energy. Brain gives us intelligence, sharpness, memory. All words are related with dry fruits. अगर हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, हमारा दिमाग तेज़ चलेगा, शार्प रहेगा, हमें चीज़ें याद रहेंगी. राइट? एंड दिस इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट गिव्स अस एनर्जी टू. Chicken. Chicken is vitamin B, good for our health again. And spinach, vitamin K, have lot of fiber and iron. ताकत हमें spinach से मिलती है. So please match them nicely and see. It's written here, eating an apple is healthier than drinking a glass of apple juice, because obviously juice has no fiber. हम जब एप्पल का जूस निकालते हैं, it has no fiber, and fiber is important for our body. So it's better, children, to have apple. You have good strong teeth, you can bite an apple nicely. Yeah? Okay.
So exercise. See this. Vitamin E, dry fruits. Vitamin A, carrots. I think I missed one. No, I didn't. Vitamin E, dry fruits. Then A, carrots. B, fish. C, orange. And K, spinach. So you can easily refer to this video while correcting your exercise. The next. C. Identify the cuisines to which these dishes belong. Okay, so we need to write the correct answer in the boxes. अब ये जो आप अपनी बुक्स में cuisines देख रहे हैं, हमें ये बताना है कि ये exactly कौन सा cuisine है. मुगलई है कि मैक्सिकन है और चाइनीज़ और इटालियन, राइट? So picture number 1 is pasta is Italian, is an Italian dish. So please write D in the box. Please write D in the box. The next one is sushi. Sushi is Japanese. Sushi is from Japan. It's a Japanese dish. So please write E in the box. E, alphabet E in the box. Number 3, chow mein. Very easy. Chinese. आप सबको पता होगा. Everybody must be knowing. Children like chow mein. All right. So chow mein is Chinese. Then so we will write C in the box. First is pasta, Italian. So we will write D. Second is sushi. So we will write E. Third is chow mein. So we will write C from China. It's a Chinese dish. The next is biryani, is Mughlai. So we will write B, alphabet B. Alphabet B. And last, nachos and salsa. All-time favorite. Crispy and tasty. So nachos and salsa are from, it's a Mexican dish. See. Yummy. It's a Mexican dish. Right? So this was the last slide, children. We did exercise A, B and C today. We did till C. Tomorrow we will continue with the other exercise. So enjoy your food today and tell mama to make anyone out of these and enjoy your day. I will see you tomorrow and will teach you more about food around the world from our plate too. Bye bye. Take care.